Digestive system of grasshopper. We all know that digestive system comprises of alimentary canal and digestive gland. The digestive system of grasshopper is similar to the digestive system of cockroach. It also comprises of alimentary canal, which starts from mouth and terminates at anus. The whole alimentary canal is a tubular structure and it can be divided into three distinct regions. First region is called the foregut, middle region is called the midgut, and the posterior region is called the hindgut. Foregut is also known as stomatium, starts at the mouth. Mouth is surrounded by the mouth parts and open to a short muscular pharynx. The pharynx lead to a slender, narrow, tubular esophagus, which enlarges into a dilated, conical, sac-like thin-walled structure called the crop. The crop extends up to the posterior end of the thorax. Crop abruptly dilates to form a thick, hard, slightly conical structure called the proventriculus or gizzard, just as in cockroach. The proventriculus is a thick walled structure. Thickness is due to the presence of large, powerful circular muscles which operate a number of hard chitinous plates bearing teeth. This complicated structure is an important masticatory apparatus. It helps in the mastication of grain or food. It grinds the solid food. Large sphincter muscle at the hind end of proventriculus or gizzard forms the cardiac valve to control the passage into the midgut. A pair of small branched salivary glands are found attached to the ventral side of esophagus and the crop. The duct of salivary gland open into the mouth cavity at the floor of the mouth cavity at labium. Foregut is lined internally with the chitinous intima. The hindgut or mesenteron is the ventriculus or stomach. It is a very prominent straight tube situated within 4 to 5 abdominal segment from the cardiac sphincter to the point of origin of Malpighian tubule. Its transparent membranous wall are not lined with cuticle as in the foregut. A series of 6 double finger shaped hepatic ceca or gastric ceca arises from its anterior end in 2 groups.
The first group of thick, broad, pointed tube is directed forward, while the second group of slender ones point posteriorly. These open independently into the anterior end of mid-gut. The pyloric sphincter, located in the sixth abdominal segment, marks the posterior end of the mesenteron. A number of fine thread-like pale yellow Malpighian tubules take their origin from this area and may be seen floating about in the hemocoelic cavity independently. This is the structure of alimentary canal of grasshopper, starting from the mouth, pharynx, esophagus, salivary gland are the digestive glands, then gizzard, midgut, Malpighian tubules, they are the excretory organ, pyloric valve, which terminates the mesenteron region or the midgut region, ileum, colon, rectum, and anus. The hindgut or proctadium consists of an enlarged anterior portion, the ileum, and a narrow middle portion, the colon, and slightly dilated but very thin-walled prominent region called the rectum, which open to outside by an anus. Hindgut is lined internally by the chitinous intima. Feeding and digestion of grasshopper. Grasshopper feed on vegetable food. Food is held by the forelegs, laborum and labium, lubricated by salivary secretion which contains some enzymes, and chewed by the mandible and maxillae. Chewed food is stored in the crop. It passes onward onto the gizzard little by little, where it is further pulverized, strained, and passed on into the stomach. The glands in the wall of stomach and hepatic caeca secrete few enzymes which bring about digestion. The slightly alkaline or acidic secretion of midgut contain maltase, lipase, lactase, protease, trypsin, and epsin. These are the enzymes which helps in the digestion of carbohydrate, protein, and lipid. The absorption of food material takes place in the midgut. By the time the food material reaches the rectum, maximum nutritive material are absorbed by the intestine, and the excess of water is absorbed in the rectum. The undigested material or the residue is transformed into slender fecal pellet to be ejected out through the anus. ग्रास हॉपर में पाचन तंत्र कॉकरोच के समान ही होता है। इसमें आहार नाल सुविकसित होता है। वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अग्र आंत्र फोरगट, दूसरा मध्य आंत्र मिडगट और तीसरा पश्च आंत्र या हाइंडगट। इसमें अग्र आंत्र व पश्च आंत्र क्यूटिकल के अंतर्वलन के कारण क्यूटिकल अस्तरित होते हैं, जबकि मध्य आंत्र में क्यूटिकल का अस्तरण नहीं पाया जाता है। अग्र आंत्र का प्रारंभ मुख से होता है, जो कि मुख गुहा की पृष्ठ सीमा पर स्थित मुख से होती है। यानी माउथ जो है, मुख जो है वो
माउथ अपेंडेजेस द्वारा ढका हुआ होता है या चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, जिसके द्वारा प्री ओरल कैविटी का निर्माण होता है। यह बिल्कुल कॉकरोच के समान ही व्यवस्था होती है। मुख एक छोटी ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी आगे चलकर एक छोटी संकरी और पतली भित्ति वाली नलिका, जिसको कि ग्रसिका या ईसोफेगस कहते हैं, में खुलती है। फिर ग्रसिका एक पतली भित्ति वाले बड़े आकार के थैले नुमा संरचना, जो कि अन्नपुट या क्रॉप कहलाता है, में खुलती है। अन्नपुट कक्ष के मध्य भाग वक्ष के यानी थॉरेक्स के मध्य भाग तक फैला रहता है। अन्नपुट के नीचे एक जोड़ी शाखित लार ग्रंथियां पाई जाती है। यह बिल्कुल कॉकरोच के समान सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनकी वहिकाएं, लार वहिकाएं, मुख गुहा में लेबियम पर खुलती हैं। क्रॉप के पीछे की तरफ एक छोटी कठोर पेशणी, जैसे गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस ग्रंथिल जठर कहते हैं, जो वक्ष के पिछले सिरे तक फैली रहती है। पेशणी की भित्ति मोटी व पेशीय व काइटनी प्लेटों व दांतों द्वारा अस्तरित होती है। अगर हम इसको समराइज करें तो एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में बटा होता है। पहला अग्र आंत्र, जो कि माउथ से यानी मुख से शुरू होता है। यह मुख पूर्व मुखीय जो गुहा है उससे सराउंडेड होता है, जो कि लेब्रम, मैंडिबल, मैग्जिले, लेबियम द्वारा बनता है। माउथ फेरिंग्स, फेरिंग्स ईसोफेगस, ईसोफेगस क्रॉप में खुलता है।